अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आवर शो दो मस्ताने। मैं हूं, ये है। वैसे अगर आप लोगों को अभी तक हमारा नाम नहीं पता, नो नीचे लिखा आ रहा है, लेकिन अगर आपको हमारा नाम इतने शोज के बाद नहीं पता तो शर्म का मुकाम है हमारे लिए यही कहने वाला था मैं। हाँ, क्योंकि अगर मैं होता ना एज अ व्यूअर, मैं भी मतलब नाम तो बहुत दूर की बात है। मैं तो होता ही नहीं। मैं तो होता ही, यही मैं कहने वाला था। तो I'd like to introduce myself as Mr. Karahi and Mr. Haroon Qureshi. Yeah, and I guess I'm Mr. Biryani. Yeah. Chicken biryani. They're But really if you like lamb, they're really tacky if they, names, if they like lamb, then I can be lamb biryani. Lamb biryani. See how horrible these jokes are? I mean, they're प्रिपेयर नहीं किया हमने आज, प्रिपेयर नहीं किया। We never prepare. That's the beauty of this show, that we're not prepared, and I think it makes it look so authentic. Would you say? Yeah. At least I got some stuff right. All right, listen, stop talking. We don't have enough time. अच्छा, ये हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट जहांपना सुल्तान ऑफ द एम्पायर ऑफ द ऑटोमन्स, हारून कुरैशी साहब। रोंगटे खड़े हो गए यार। थैंक यू वेरी मच। क्या बात करना चाहेंगे आज आप? यार ये अब जब ये एयर होगा तो ये जो इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं आजकल के, ये थोड़े से पुराने हो जाएंगे। इट्स ओके। पाकिस्तान में कुछ पुराना नहीं होता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये जो सहाफियों के साथ, और जहां तक ये शहबाज गिल जो है, इसके साथ जो क्या कहते हैं, क्या हुआ इतने तशद्दुद, वो इसलिए यार कि कोई वो सामने से जा रहा था और मुझे वेव कर रहा था और मैं डिस्टर्ब हो गया यार। वो आपको नहीं, वो मुझे वेव कर रहा था। कर रहा था या कर रही थी? आप बातें करें। Anyway, so I'm not impressed with the way that Shehbaz Gill was tortured. I mean, he was hung upside down and stripped naked and smacked on his rear. Not nice. This is not nice. I'm sorry to say. I mean, it sounds funny, but it really ain't nice. It's not good. It's not a pleasant feeling. It depends. I mean, some people kind of enjoy this kind of stuff, but quite frankly, it's traumatizing. It's demeaning. It's belittling. So that happened. Jamil Farooqi, who happens to be a big guy, he's not a big guy, but he's Farooqi Saab. He's a young guy, man. He's a young, poor guy, man. He got slapped upside the ass. Is that the guy who was at the airport crying? Yeah, the guy who was crying at the airport, and he was like leaning into the other guy, and he's like saying, you know, इन लोगों ने मेरे साथ ये किया, मुझे नंगा किया, मुझे चित्तड़ मारे, मुझे ये किया। यार ये खुदा का वास्ता, खुदा के लिए यार। We condone that. No, we do. Well, we don't condone that. You mean? Actually, no, we condemn that. We condemn it. यार इंग्लिश डिक्शनरी अगली बार ले आया ना प्लीज मेरे लिए। यार देखो, I don't speak English, I don't speak Urdu, I use sign language when I talk, man. Anyway, the point that I'm making is that the way that those two people were treated, I mean, these are dignified individuals with a lot of integrity, and they were stripped literally naked. तो इनका क्या कसूर क्या था? इनका कसूर ये है कि वो सच बोलते हैं। Okay, that's huge, man. आजकल के जमाने में you cannot. वो सच बोलते हैं। आप अव्वल तो आप बोल नहीं सकते, और सच तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। सच तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। देखो यार, ये सिर्फ यही मसला नहीं है। And I can say a lot more right now, but I won't, because I don't have any of the information, nor do I have the education with respect to the history of Pakistan. But as far as I have been watching politics over the past year in Pakistan, very intense. I've been watching Pakistani politics for a number of years, but over this past year, there's been a lot that's happened. Abdullah, there's been a lot of sequence of events that have occurred. A lot. Even right now, they're occurring. Yeah, and they're happening right now. But what I'm saying is, we don't know what they are because we're sitting here, and we're running out of time here, and so I'm gonna stop talking. But I just gotta say, a lot of crap went down over the last 6 months. Yes. And whatever we thought we believed before these 6 months, I think we're gonna have to really start assessing that. It's not an alternate universe, man. It's this universe. It's not an alternate reality. It's this reality. But we got to start reassessing. Reassessing, I think. Yeah. That's all I got to say about that, man. No, you also wanted to mention something happened today with the election. Listen, the voting. The Supreme Court has just. Yes. And listen, when this airs, it's going to be old news. But I'm telling you, this is huge for Imran Khan.
This is huge for PTI. This is huge for Pakistanis in Pakistan, and it's incredibly huge for Pakistanis all across the world. Yeah. Overseas Pakistani votes are now back on track. But it hasn't been approved yet, or has it? At least they're talking about it. Right? It's not just that they're talking about it. By the time that this airs, it'll be approved. तो यानी कि अब मैं यहाँ बैठ के जिसको मर्जी चाहे वोट डाल सकता हूँ. किसी को भी. Please don't let that go to waste. Or it's not going to be very, like, I'm not picking sides, man. Yeah. I'm not being biased or anything. But we know who we're going to pick. Yes, you know, I actually, on that note, I have a very technical question for you. Okay. तो मैं वोट डाल सकता हूँ. So let's just say I want to vote for Altaf Hussain Saab. Why the hell would you want No, but let's just say. What are we... Let's you know what? I have a feeling you do want to vote for him. I do, actually. But my question is, do I just cast one vote for him? क्योंकि एक वोट तो एक आदमी के लिए डाला जाता है ना. हाँ. लेकिन उनका साइज आपने अगर देखा है. नहीं, उनके लिए असल में उनके जो ना उनके लिए कितने वोट डालने पड़ेंगे? उनकी जो मेंबरशिप जो है ना वो मेरे ख्याल से 10-15 वोट ही होंगे उनके लिए, एक for one individual. हाँ, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल है because he's डिनर में एक आदमी को आराम से खा जाता है. He's the size of 10-15 different people. Yeah. And listen, we're not doing, weightism here. What's that thing called when you weightism? Racism? Or... No, not racism, weightism. Oh, weightism. अच्छा, no, okay. We're not weight racism. It's weight racism. Obviously, some of us here, I'm not going to name names, but some of us here on this panel need to be hospitalized. Okay? But he's a big man, and there's nothing wrong with being big. There's nothing wrong with being as big as he is. At least you called him a man, so that's a compliment. Right. Anyway. Changing gears. Right. Let's switch gears. That was horrible. See what he did? मैंने first gear पे लगा दिया. यार. Inflation. I don't know how else to introduce this segment or this topic. No, I thought I'm going to say gears, inflation. Inflation होती है महंगाई. महंगाई होती है. बिल्कुल. I'm going to get really technical and boring for the next 10 seconds, and I'm going to define inflation for you in English. Thank you. उर्दू में अगर लिखा होता तो मुझे पढ़नी आती तो पढ़ भी देता. हाँ. In economics, inflation is a general increase in the prices of goods and services in an economy. When the general price level rises, each unit of currency buys fewer goods and services. Consequently, inflation corresponds to a reduction in purchasing power. I'd rather watch paint dry than listen to what you just said. Yes. But it's true. That's exactly the definition of what inflation But in layman's terms, आसान लफ्जों में महंगाई हो गई है भाई. महंगाई. अगर आप पिछले साल $100 की शॉपिंग कर रहे थे ग्रोसरी स्टोर में, तो आज वही चीजें आपको $108 की मिलेंगी because the inflation in Canada is close to 8%. Let me give you some numbers. I did not know that, by the way. नहीं, US. And I'm a finance guy. US 8.9%. What? Yes. Europe 8.8%. Brazil 10%. Russia 15%. Turkey and Argentina 71%. What do you mean 71%? 71%? जी. तो आपकी जो grocery $100 की थी, now consequently they're going to cost you $171. तो आप $71 जाके कमाइए, Uber कीजिए और अपने grocery खरीदिए. ये मेरे ख्याल से अपनी जो frustrations जो है ना उसके बारे में वो express कर रहे हैं आप. मैं तो रोज महंगाई से परेशान हूँ. लेकिन यार ये महंगाई, I mean you're talking about Canadian. I'm talking about worldwide inflation. The numbers I gave you are. लेकिन अगर तुमने महंगाई की बात करनी है, तुम वो पेट्रोल की बात करो यार पाकिस्तान. भाई पेट्रोल तो आप अगर यहाँ पे देखें तो बिजली की बात करो यार तुम पाकिस्तान में, हैं? No. It's doubled, it's tripled, it's quadrupled. It's ridiculous what's going on, man. Yes. You either pay for your rent or your electricity, or you eat. Or you don't eat. And I'm talking about Pakistan, but even here in Canada, I think forget Canada, globally, we've got this problem in this world right now. Yes. And there's a disbalance in our economic global system. Yes. We're going to have a number of different conversations about this, and economics can be a dry, it's a very dry thing. It is very dry. But we're going to make it very exciting. Because we're going to make it exciting for you. Yeah. Because we've prepared a really nice skit about महंगाई and inflation and how it affects lives of people. And it's going to be done so creatively. Creatively. Yeah. Creatively.
and it's going to have a little tinge of humor in it and a little bit of endearment in it. Yeah. So we really want you to watch. It's going to be fantastic, and Abdullah is going to be performing in this. But before we do that, before we go and show you the segment or the Actually, skit, don't watch it, man. It's going to be. I'm gonna have some. I'm gonna tell you some. Isn't that what I just said? Some dad jokes. It's horrible, man. What's going to happen in the next 15 minutes? I'm not watching. Let me tell these guys a few inflation-related dad jokes. The definition of inflation: by the time you can finally make ends meet, inflation moves the ends. मुझे भी हंसी नहीं आ रही. I'm laughing at myself. That was awful, man. Okay, no. But you like this one. Yeah. How did our chartered accountant explain inflation to his wife? And this is what he said. Wife, or dear, honey, you used to be 36, 24, 36. Vital signs. Vital signs? Or those are not vital signs. Vital sizes, or whatever that means. But now you're 46, 40, and 48. So in theory, you have more than you did before, but your value is lower. That, my dear, is called inflation. Over and out. We'll be back after this break. Again, it's personal frustrations that we can let out in a joking manner. Ab break pe jao. Break me? We'll be right back, guys. Thank you. अरे आ गए आप? नहीं, अभी रास्ते में हूँ. अच्छा जब आ जाए तो बता देना, ठीक है? वो भाई मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्लीज कोई एडविल, टाइलेनॉल वगैरह ला दो यार. भाई दवाइयाँ पता है कितनी महंगी हो गई हैं? मैं नहीं दे सकती दवाई. महंगी हो गई हैं. चाय बना दो प्लीज. चाय? वो तो मैंने मेहमानों के लिए रख दी. चाय तो नहीं हम घर में बना सकते. मेहमान? हाँ. कहाँ है भाई मेहमान? इतनी महंगाई हो गई है, कोई आएगा तो मैं उनको क्या दूंगी? थोड़ा पानी मिल सकता है प्लीज, ये वो भी महंगा हो गया है. हाँ पानी मिल सकता है, बिल्कुल. ये ले पूरा का पूरा जग ही पी लें. सही है? क्या हो गया आप? अच्छा खाने में क्या बन रहा है ये बताना जरा. खाने में तो नहीं कुछ बन सकता क्योंकि घर में कोई ग्रोसरीज नहीं है, बहुत महंगाई हो गई थी और आपने पैसे भी नहीं दिए थे. कहाँ से लाती? पैसे कैसे? तो कुछ नहीं बना. थोड़ी सी ऐसा करो, चिकन बिरयानी बना दो, बहुत मूड हो रहा है मेरा. चिकन बिरयानी? गोश्त के तो पैसे ही नहीं थे, तो गोश्त तो आया ही नहीं. अच्छा ताहिरी बन सकती है. आलू और आलू 3 गुना महंगे हो गए, पता है? आज ही मुझे अफशीन ने फोन करके बताया था. तो क्या अब आलू नहीं नसीब होंगे क्या हमें? नहीं, हम बाहर से खा सकते हैं जाके. अच्छा बाहर फ्री में बट रहा है खाना है, वो पैसे कौन देगा? वो तो मैं दूंगा. जाहिर है, और कौन देगा? अरे यार कहाँ मर गया मैं. अच्छा चलो फिर जल्दी से तैयार हो, चलो मुझे भूख लग रही है यार. हाँ तो फिर चल के करते हैं ना. वो मेरी दोस्त के हस्बैंड भी गए हुए हैं बाहर, तो मैं उससे भी पूछ लेती हूँ, वो भी अगर साथ चल रहे हैं हमारे. बेचारी अकेली बोर हो रही होगी ना. अच्छा मैं 2 लोगों के बजाय 3 लोगों का बिल दूंगा. पूछ लूं मैं? प्लीज जो करना है जल्दी कर, मेरी माँ भूख से. हेलो. हाँ अफशीन, हाँ हम लोग जा रहे हैं डिनर पे, तुमने चलना है साथ? चलना ही होगा. कढ़ाई वाली जगह पे. हाँ वही हमारी फेवरेट. बच्चे हाँ तो कोई मसला ही नहीं है. हाँ पूछ, फुप्पी आई है, ठीक है, उनकी फैमिली को पूछ दो. हाँ तो मैं 10 लोगों की रिजर्वेशन करवा देती हूँ, ठीक है? ओके आ जाओ. ओके सी यू बाय. बस 10 लोग. हेलो क्या हुआ? क्या हुआ? जी नाजरीन, वेलकम बैक टू आवर शो दो मस्ताने. हम हाजिर हुए फिर से. पता नहीं क्यों, लेकिन हो गए. बस हो गए हैं. और आज हम एक और गाना लाए आपके लिए. आपको ये गाने पसंद हो ना हो, लेकिन हम लाते हैं और फिर हम इनको उधेड़ के रख देते हैं. बस यार ये कोई वो डायनासोर के एरा का कोई गाना ना हो यार प्लीज. नहीं ये उससे भी पुराना है. अच्छा उससे भी पुराना. Before the world was even created, before the Big Bang. Let me introduce the song first. बहुत पसंदीदा आप लोगों का गाना होगा. किशोर कुमार साहब ने गाया था. दिलबर मेरे कब तक मुझे. फिल्म थी सत्ते पे सत्ता, यानी 7 on 7.
अमिताभ और हेमा मालिनी पे ये गाना फिल्माया गया था। Big B's my favorite, man. आर.डी. बर्मन ने इसको कंपोज किया था, लिरिक्स थे गुलशन के। तो प्लीज गाना Oh, सुनिएगा। that's what it was called, यार, ageism. एजिज्म, गाना सुनिए। Oh no, waitism. कैन यू वेट? Oh, I'm sorry. गाना सुनिएगा Sorry और about वापस और जाइएगा मत। We'll be हाँ। right back after this song. क्या गाना था, दिलबर मेरे कब तक बहुत मुझे। पुराना गाना था। हाय हाय हाय, मजा आ गया यार। मैं तो जब भी किशोर को सुनता हूँ तो मेरी जो रूह है ना, जाग जाती है, अच्छा, क्योंकि वैसे सोती रहती है हर वक्त, रूही रूह हो तुम, बेचैन रूह हो। बेचैन रूह। हाँ। अच्छा कड़ाई साहब, जी जी। I have 3 questions for you about this song. Oh, good God. I know you Okay. love this segment. I know you love getting into the I weeds. love it so much. You love dissecting. I come here for this segment. That's what I come here for. हर हफ्ते मैं इनको फंसा देता हूँ इस सेगमेंट में। Anyways, दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे? First question. Oh my God. कब तक? मतलब कब तक? नहीं, कब तक? भाई 40 साल हो गए इस गाने को आए हुए, कब तक? कब तक? I honestly, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है यार इस सवाल का, क्योंकि इतना घटिया वाहियात किस्म का ये सवाल है कि मेरे पास मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। कब तक? पर सोचिए आप कड़ाई साहब, मिस्टर कड़ाई, 40 साल से गाना बज रहा है, हाँ, लेकिन अभी तक नहीं पता चला कि कब तक। यार बस ये जो भी है ना, बस I want it to be done really quickly, whatever this कब तक is. Okay, तब तक we'll move until on. I'll ask you another question. Yeah, I don't even know how to you know, go to the next question, man. Next question for Mr. कड़ाई। दिलबर मेरे कब तक, ये कब तक तो नहीं बता सके, कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे? कैसे? मतलब कैसे? कैसे क्या? कैसे ही तड़पाओगे? कैसे तड़पाओगे? मतलब वो क्या, वो अमिताभ पूछ रहा है हेमा मालिनी से कि तो वो कैसे तड़पाएगी उसे? यार मुझे उसका नहीं पता, लेकिन मैं तड़प रहा हूँ यार। मैं तो बुरी हालत हो नहीं, गई आप है जरा मेरी सुन के। सोचिए कड़ाई हाँ। साहब, सोचिए जरा कि क्या, किस तरह तड़पा सकती हो? क्या मतलब वो किलों के बेड पे लिटाएगी उसको? अच्छा यार, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, या इतना टाइम नहीं है मुझे कि मैं ऐसी मतलब अमेजिंग चीजों के बारे में मैं सोचूं। या वो सूली पे चढ़ाएगी, उसको कील ठोकेगी उसके हाँ। हाथों पे? किस तरह? फिलहाल यार तू मेरे लिए यार वो कील ले आया यार मेरे लिए। मैं या कोई हथौड़ा ले आए ताकि मैं अपने आप को यार मार लूं। आग पे चलवाएगी क्या उसको? अच्छा, अब you know, I was hoping that perhaps this would be an interactive sessions that maybe you guys can tell us about this torture आप thing. बताइए कब तक? नहीं, कब तक नहीं, मतलब ये तुम तड़पने वाली बातें कर रहे हो ना तुम अभी। Okay, final question. We'll move on. कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे? मैं आग दिल में लगा दूंगा वो। यानी ये भी कोई बात हुई मिस्टर कड़ाई कि वो आग लगा देगा? कैसे आग लगाएगा? दिल में कैसे आग लगाएगा? यार यहाँ तो यार फायर हैजर्ड्स हैं। मैं जब भी मुझे आग के बारे में सोचता हूँ, मुझे खुद मतलब मुझे डर लगने लगता, खौफ आता है मुझे। आग कैसे लगाएगा? आप मेरा जवाब दीजिए प्लीज। यार वो 2 पत्थर लेके, जैसे हम पहले वो करते थे हमारे जमाने। नहीं, दिल में क्या वो केरोसिन पिलाएगा क्या उसको पहले? अच्छा, फिर उसके अंदर लाइटर डालेगा, क्या करेगा? अब मैं यार इसका जवाब क्या दूं? मिस्टर कड़ाई, मुझे जवाब चाहिए। अच्छा, कब तक, मैं कैसे और कैसे? हाँ नहीं, मैं अब वो परेशान होने लगा हूँ। I'm going under stress now because I have no idea how to answer this kind of a question. मैं खुश नहीं हूँ आपसे मिस्टर। I think I spend a lot of my time trying to figure out his questions answers. And believe you me, I had to check myself into a psych, like a psych ward because of this. And now this question is going to be bothering me forever about this AUG thing. I guess my job is done then. You know, यही मैं चाह रहा था। he asks me these questions, and then I find myself walking out in the middle of the street going, no, fire, AUG, hazard, how is he going to put... And people are honking at me, they're screaming at me, and this is what's going to happen this time. I think we should end this session. We should. No. Before you go. Right. Before you go. Yeah. And before I go. I'm going to just, you know what, I'm going to put kerosene on myself, man. I have a few, your favorite Abba Huzur jokes. Oh Abba my Huzur God. To tell you. Classic dad jokes. Okay. First one. Why are elevator jokes classic and good? I don't know. Because they work on many levels.
अच्छा था यार, ये तो अच्छा था यार. यार pack up यार, pack Come up. on, yeah. Pack Okay. up कर लो. Okay, next one. What do you call a group of apes that start a company? Apes? Yeah. I feel like an ape right now, quite frankly. I really do. Please, we're all dying for the answer. Monkey business. No? Did you hear what he just said? आपको भी नहीं पसंद आया? Nay, if you're listening, the one or two people out in the audience who are listening to this. Okay, last one. This is a good one actually. Do you want to know why nurses like red crayons? I don't, but Because- we're gonna, yeah. Because sometimes they have to draw blood. Sweet Jesus. Holy Mother. Holy Mother. यार pack up. या तो Oh, यार इमरान pack up कर ले यार. या तो इनको ये जोक समझ नहीं आ रहे हैं, या इतने ज्यादा समझ आ रहे हैं कि इनकी समझ से बाहर हो गए हैं. समझ से बाहर. Do the Hatauda thing. I want that Hatauda thing. What are you talking about? Keeling and Hataude? Yeah. Somebody grab me a hammer, man. Grab इनके me a लिए hammer. एक कील और एक हथौड़ा प्लीज, एक बड़ी सी, इतनी बड़ी कील. On that note, Nazreen, thank you so much for being part of our show tonight. Oh God, I don't know if you are part of us or not. I mean, there's probably crickets chirping over there. Ullu bol rahe hain. Oh yeah, cricket. I have a cricket joke too. That's for next time. Okay, for next time. Khuda Hafiz. Take care, guys. Thanks for watching. Abdullah and Haroon will be back for you next week, same time, same place. Hopefully, if we're not dead.